OS stands for operating system. This operating and this one is the system. Okay. So students, already you know that the entire system software is categorized into two types. One is for developing purpose and one is for what? Management purpose. In developing purpose, we have covered that. We discussed that the language processor, the compiler, interpreter, linker, loader and programming language, this type of software comes under the developing purpose system software. And today our point of discussion is about some system software which are used to manage the computer system. And out of that, operating system is the most important system software, and operating system is dedicated to operate and controls the entire hardware part of the computer system. The student, in a computer system or including the computer system and working point of view, entire process is categorized into four sections or four components, you can say. Look at one is end user, this is the end user, and another part is hardware, another is software, and one is data. The entire computer system is divided into these four sections. One is end user, one is hardware, another is software, another is data. Students, what is the end user? Why this name is end user? It means that after the completion of the entire manufacturing process of the computer system, some users are there and for them this computer is made up of. Okay? The computer is built for whom? जहाँ पाई कंप्यूटर टी डेवलप होइछि सेही माने हेले एंड यूजर. It means that at the end of manufacturing process, some users you can find there, and that users are target user. For them, the computers are there. Okay, so this type of users, which users are involved at the end of manufacturing, that users is known as the end users. आमे कंप्यूटर टे डेवलप कले, मोबाइल टे तैयारी कले, तो मोबाइल टा कहाँ पाई यूज करछोंदी? एंड पर लास्ट जो माने से मोबाइल की यूज करिवे सेही माने हेले एंड यूजर. दैट्स व्हाई इट्स नेम. यू कैन से there's a user. User may be categorized into two types. One is internal user and another is the external user. At the developing process, after some steps, there are some users, that the internal user of the company, which are responsible to you to use the product, which are responsible to test the product and test how much this product is satisfied the requirement of the user. Okay, the जेतला गुटे जिनस प्रोडक्ट तैयारी होची से प्रोडक्ट तैयारी हवा समय किछि किछि स्टेप परे से प्रोडक्ट को टेस्ट करा जाए. किछि टेस्टिंग इंजीनियर थांती समान को हमें इंटरनल यूजर कहते. से इंटरनल यूजर माने कोन करंती? एंड यूजर जो मार्केट रे जो यूजर अछंती सेमानकर रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रे से प्रोडक्ट को टेस्ट करंती हाउ मच दैट प्रोडक्ट कैन मीट द डिमांड ऑफ दैट मार्केट यूजर. तेणु सेटा को टेस्ट जो माने करंती ताको हमें कहउछंती कोन? इंटरनल यूजर. दैट इज इंटरनल यूजर. आउ गोटे किछि रहिले एक्सटर्नल यूजर. दिस एक्सटर्नल यूजर, and these external user which are, you can find this type of external user from the market, and this external user is known as the end user. Okay,
गोटे स्पोर्ट्स बाइक डेवलप हो स्पोर्ट्स बाइक रो एंड यूजर किए यूथ मास यंगस्टर्स आर द एंड यूजर तो हियर एंड यूजर इज द मोस्ट important factor end user plays the important role of the entire working system inside the computer system okay तो पूरा वर्क फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू रे जो मानकर वाइटल रोल होची these are the end user if there is no end user then why this computer the computer is made for which purpose to just meet the demand of the end user this is the end user is the one component of the computer system you can say second part is the hardware and this hardware you already know that hardware is a touchable and visible part of the computer system and this hardware without this hardware then computer is nothing okay so software is something is there मुझे already तुमको कही छी software makes the hardware active the software flows one type of energy software insists one type of energy inside the computer hardware and makes the hardware active this is the software the software is one type of the most important sector of the computer system and hardware which is touchable and end user touch the hardware end user do some things end users perform some jobs by the help of hardware but end user is not aware about the presence of the software end user use the आमे कोन गोटे कीबोर्ड यूज करछोंदी कीबोर्ड रो की प्रेस कले समथिंग आमे डिस्प्ले करछोंदी तो आमे ता भितर कोन अछि डिवाइस ड्राइवर कीबोर्ड भितर गोटे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर थाए से सॉफ्टवेयर प्रेजेंस आमे जानि छ कि आमे जानि नाहंती तो एंड यूजर जनरली इज नॉट बॉदर अबाउट द प्रेजेंस व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर और नॉट तो एंड यूजर यूज द हार्डवेयर एंड डू द जॉब clear and here software makes the hardware active and software creates an environment in that environment allows the end user to perform a particular job so here end user interact with the hardware directly and perform the job by the presence of this software and here what is data now data is the food of the computer तो एंड यूजर्स कंप्यूटर को यूज करছে काहे की टू इंसर्ट सम डाटा टू स्टोर सम डाटा and when end user requires end user fetch that data to meet its demand तो एंड यूजर बा यूजर कंप्यूटर बा आमे माने कंप्यूटर को काहे यूज करछंदी केवल डाटा स्टोर करिया पई डाटा फेच करिया पई डाटा इंसर्ट करिया पई डाटा ही काम ना कौन कंप्यूटर सहित किसी काम यहीटा को डिफरेंट मैनर आम यूज कर डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट आम कहते वर्किंग फॉर्मेट वर्क फ्रेमवर्क डिफरेंट टाइप फ्रेमवर्क आम यूज कर ओके बट मेन आमर फूड ऑफ दैट कंप्यूटर इज द डाटा तो डाटा इज ऑल्सो ए कंपोनेंट तो हियर entire computer system its organization point of view its processing point of view entire computer system is divided into 4 components one is end user another is hardware another is software and most important is the data and samastakar importance equally rich they have the equal importance एटी गोटे पिक्चर ड्रा करछे देखो so here the end user okay next one is application program next step utilities and next one is
operating system and last you can find the hardware. Okay. In a hierarchical point of view, I can show you the end user here, and end user interact with the hardware. End user interact with the hardware by the presence of some software. Some software allows the end user to interact with the hardware. Clear? And end user use some application programs to perform a particular job. The entire here, this is the user, you can say end user, this is user, and application program utility and operating system comes under the software, and this one is the hardware. And end user use this hardware with the help of software for run the, but to insert some data, to collect the data, to fetch the data, it plays with the data सहित ही खेले end user. Computer को need करे end user to for the data processing purpose. You can say for data processing purpose end user use the computer. Okay. So here entire steps is divided into two. It divided into three sub steps. One is user and software and hardware. And here application programs comes under application software. So here application software is further divided into two types. One is system software, already janicho, and another is application software. And this is the application software. And this part utilities and operating system is the system software. Utilities feature tam paibo backup software, antivirus software, this type of softwares rows utilities bhitre. Okay, je ki computer ra performance ko boost up karuchi. This is the utilities, and operating system amor as a topic hochi operating system. Clear? Student, here application software is required to perform a particular job. We cannot perform any task day-to-day life. In day-to-day life, we cannot perform any task using the system software. And immediately, even we are not aware about the presence of system software in a computer system. You just start the computer and open your MS Word and type some keys in the keyboard on the keyboard, and you can see the typed keys are displayed on the monitor. तमे जहाँ कुटे की रे कीबोर्ड जहाँ तम प्रेस कला मॉनिटर रे डिस्प्ले होची. आमे जानले गुटे आमे डॉक्यूमेंट क्रिएट करछन. ए डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करा होची सेति पय आमे जानले गुटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेटी अछि. वर्ड प्रोसेसिंग गुटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेटी अछि जो पय जोडी आमे अलाउ करछि कोन से डॉक्यूमेंट क्रिएट करिया पय. किंतु सेटी गुटे सिस्टम सॉफ्टवेयर अछि ए बाबत हमकु जणा न थाए. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हाइड्स द work mechanism of computer from the user, you can say. System software hides or operating system hides the work mechanism. ता भितर जहाँ काम होची सेटा को यूजर ठार को लुचे की रखे. यूजर जन कौन जाने ना यूजर केवल हार्डवेयर की यूज करछ. ओके, एंड या भितर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा कौन से काम करूची. किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भितर गोटे इंटरेक्शन होची. There is some software, there is something is there which builds a bridge in between application programs or application software and hardware. Or you can say there is something which creates a communication in between end user and hardware, application program and hardware, and that thing which are responsible for bridging in between application software, end user and hardware is known as the operating system.
ऑपरेटिंग सिस्टम से भली किसी गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर जी कि एंड यूजर एप्लिकेशन आउ हार्डवेयर भितर गोटे ब्रिज तैयारी करछि गोटे कम्युनिकेशन जो गैप रोची से कम्युनिकेशन गैप को भेनिश करुच्ची अर्थात गोटे कम्युनिकेशन को बिल्डअप करुच्ची तो ऑपरेटिंग सिस्टम you can say provides one type of interface. We cannot interact with the hardware. Yes, we can physically we can touch a keyboard. It's okay. But using the keyboard, pressing the keyboard is not sufficient to display something on the monitor. The keyboard actions is displayed on the monitor by the help of that software, one software, and that software is the device driver. Every device must have a device driver, and device driver is one type of system software. And here operating system कौन करुच्ची ना operating system controls and coordinates entire system of the computer. Operating system controls and coordinates entire hardware part of the computer system. That's why its name is operating system. The system, the software which is responsible to operate the system. System means computer. The software which is responsible or which is used to operate the system, operate the computer is known as the operating system. And an example is very popular example is the Windows is one type of operating system. Windows, Unix, Linux. These are the some examples of operating system. आमे जेता कंप्यूटर खोलछन गोटे विंडोज फर्स्ट ही विंडोज देखुछन दैट विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रो डिफरेंट वर्जन्स अछि विंडोज 980 विंडोज 7 विंडोज 2007 टू विभिन्न प्रकार एनटी विंडोज रो विभिन्न वर्जन्स सब रहउछि ओके खाली जानि थाओ विंडोज गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओपन हेले ही आमे कोनसे काम करिया पे सक्षम होजो क्लियर जदि जते पर्यंत विंडोज ओपन हेई नाही जते पर्यंत विंडोज एक्टिव हेई नाही जिते पर्यटन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा जाए ना कंप्यूटर भितर से आम कीबोर्ड को जिते प्रेस कले मॉनिटर रे किसी डिस्प्ले करिवो नहीं तो हियर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स इट्स बिल्ड्स ए कम्युनिकेशन इन बिटवीन एंड यूजर एंड हार्डवेयर एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द हार्डवेयर एक्टिव clear using the application software user do many jobs for example user can prepare a document user can print a document using the printer user can insert some data inside the storage memory user can load some jobs into the memory user can allocate the CPUs user can allocate the CPUs or you can say there are suppose there are multi processors and there is operating system which is responsible to allocate different processors for different jobs ये सब कथा होची user can do it but indirectly user can do it indirectly but हमको assume ये हम जानि पारछंती जे end user by user हमें directly कौन से job perform करछंती ना आमे डायरेक्टली जॉब परफॉर्म करना आमे इनडायरेक्टली गोटे जॉब परफॉर्म करछंती and that jobs are performed directly by the operating system actually operating system ही कौन से गोटे जॉब को परफॉर्म करछि आमे इनडायरेक्टली करो किंतु हमको लागे it looks like that it seems that end user performed the job by end user did that job directly but there is one thing which is responsible to do the job. The operating system is responsible to operating system is used for different purpose like memory management, device management, okay, CPU management means suppose there are multiple jobs and गोटे ही प्रोसेसर अच्छी से प्रोसेसर किपरि तार टाइम को डिवाइड करके मल्टीपल जॉब्स पाई डेडिकेटेड करियो मल्टीपल जॉब्स को किपरि से व्हाट रन करि पारिबो प्रोसेसर बा सीपीयू प्रोसेसर का कहउछन सीपीयू को ही कहउछन तो सीपीयू मैनेजमेंट जो कहउछि जॉब शेड्यूलिंग बोली जो कथाटा आसे जॉब्स व्हाट इज द जॉब शेड्यूलिंग मींस जे सीपीयू divides this entire CPU times and gives one slot of time to particular job. That is the job scheduling. ताको हमें next class उड़ीकर पढ़िबा.
जॉब शेड्यूलिंग कौन तो एठी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करछि डिवाइस मैनेजमेंट करछि इट कंट्रोल्स द आईओ डिवाइस इट कंट्रोल्स द हार्ड डिस्क मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द सीपीयू जॉब शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allocates the CPU for different jobs these type of things are done by the operating systems. And here if you assume that you are a computer then your brain is the operating system. Okay, you have a system software, that system software is your कोटा कोटा आम कहते आत्मा जोटा प्राण बोली कहते जो सोल इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड योर ब्रेन द थिंकिंग पावर इज वन टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ यू कैन से दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रोल प्ले कर योर ब्रेन तो ब्रेन तब कह सर ब्रेन तो गोटे टचेबल ब्रेन गोटे टचेबल तो सर कहते सर ब्रेन इज द टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टचेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट्स व्हाई इट इज हार्डवेयर इट्स ओके. But the brain, the mechanism inside the brain, the work mechanism inside the brain is the operating system. But brain itself, जहाँ को गोटे brain को आम धरी पार्छन्ति तार जो सेरेब्रम अच्छी जहाँ मुंड भितर जो सेरेब्रम अच्छी बा समथिंग इज देयर जहाँ भितर जो बायोलॉजिकल पिला तुम बेटर जानी परियो जदी हाँ तो एटा को आम जो ब्रेन सर्जन जो कहते ब्रेन सर्जन जदी ताको टच न करि परियो किमिति ब्रेन को ऑपरेशन करिवे तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेन इज ए हार्डवेयर. बट इनसाइड द ब्रेन भीतर जो एनर्जी अच्छी जो इमेजिनेशन अच्छी जो थिंकिंग पावर अच्छी जो वर्क मेकानिज्म अच्छी दैट मेकानिज्म इज नॉट टचेबल एंड दैट मेकानिज्म इज द सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट योर ब्रेन वर्क्स एज लाइक ए ऑपरेटिंग सिस्टम. तुम बॉडी भीतर प्रत्येक बॉडी को प्रत्येक ऑर्गन्स को कंट्रोल करूची किए योर ब्रेन एंड सेटू गोटे कॉर्ड्स लागिछि जोटे स्पाइनल कॉर्ड बोली आमे कहउछन तुम जानी थो गोटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गोटे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा ब्रेन आमर विभिन्न ऑर्गन्स को कंट्रोल करुछि. तो हियर सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट्स बा डिफरेंट ऑर्गन्स बोली कहि परछन्ती आमे जेमिति बॉडी रो एठी आमे कहउछन्ती ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पोंसिबल टू सुपरवाइज एंड मैनेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर different part of the computer system or a different hardware part of the computer you can say. Clear? Okay. So now look at here यार नोट्स मु देबी मु तुमर या पूर्व चैप्टर रे ऑलरेडी नोट दे देछि फंडामेंटल तुम इंट्रोडक्शन पार्ट नोट देछि इनपुट आउटपुट रो नोट पाई जाइछ मेमोरी यूनिट रो नोट दे साला पर मु ये सॉफ्टवेयर ऊपर नोट दे देबी. ओके तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस आमे कहले ओएस यूजेस बाय ओएस intermediates or OS provides an interface and that interface allows us to do some jobs by the help of hardware inside the computer. And there is the main part of the operating system is kernel. Some part is that known as the kernel. Kernel is the core part of the operating system and core is responsible kernel is responsible to make a bridge in between the hardware and application software. Inside there is the what OS. Hardware and application software भीतर गोटे intermediate करछि या भीतर रोछि kernel and kernel is the main part of the operating system which is responsible to make an interaction between the application software and hardware part. Generally जेमति हम आर्मी रे थांति नि गोटे आर्मी रे थांति कर्नेल ऊपर बहुत कथा दायित्व ताक ऊपर से बड़ा थाए जेमति ऑपरेटिंग सिस्टम रो गोटे पार्ट होछि कर्नेल एंड कर्नेल इज रेस्पोंसिबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. क्लियर? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज operating system there are different types of operating system you can find the types of operating system ame jauchandi types of OS ame ethi jauchandi single user and single task. One is single user and single task OS. It means that
that kind of operating system allows only one user, and that user can do a one task at a time in a single moment, at a particular moment. Gutiye samayre one task can be performed by that operating system, and that operating system allows only the one user at a time. That's why this kind of operating system is known as multi-user and multitasking operating system. What? Multitasking operating system. This is one type of operating system. Second type of this type is single user. What? Single user but and multitasking. Multitasking. OS. This is single user and multitasking operating system. This kind of operating systems allows the one user, but there is a one facilities it provide a better features there are, and that is this operating system allows multiple tasks at a time. It means that one user can perform the multiple tasks at the time of writing some documents using word processor. At the same time, that user can listen to music using the media player. At the same time, user can chat with some friends using some chatting software. Clear? The multiple actions, multiple jobs, multiple tasks can be performed by that operating system simultaneously, concurrently, at a time. गुटिए समय अनेक गुड़ाए काम को परफॉर्म करुची, but one limitation is there